We, Team Navya Bihar, kick-started our survey process at Gandhi Maidan in the early lights of dawn. Morning walkers and joggers showed unexpected cooperation, and an overwhelming response allowed us to utilize our day one of the survey to the fullest extent. We collected a lot of data from various strata of the Bihar society, starting from businessmen to fishmongers to auto drivers and college students. After Gandhi Maidan, we moved on to the area around the Premier Square Mall and interviewed more of the Aam Aadmi of Bihar. The brightest part of our survey today was the immense help that we received from an NGO worker who also runs a cafe near the mall. We learned a lot today regarding the thought and attitude of the society and how the people react to the existing law and order situations under the Nitish Kumar government. इफेक्ट पड़ता है नहीं, कैसे पड़ता है? लड़की लोग जो शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, आपको क्या लगता है कि इसलिए रेप बढ़ रहा है और सेक्सुअल हैरेसमेंट के जैसा चीज हो रहा है? देखिए, शॉर्ट ड्रेस पहनना या बड़ा ड्रेस पहनना ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ। यहाँ इशू बहुत बड़ा ये है हम लोग की मानसिक विकृति। हमारा पुरुष समाज जो है ना कहीं मानसिक विकृति के शिकार हो चुके हैं। नहीं एक मिनट सर, अगर उनकी अपनी बेटी शॉर्ट ड्रेस पहनती है वहाँ उनका ध्यान नहीं जा रहा, और पड़ोस की बेटी शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रही है तो वहाँ उनका ध्यान जा रहा है। जब पुरुष मेंटली पैरालाइज हो गया, वो चाहे इन्वायरमेंट का दोष हो या हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो इफेक्ट है हमारे यहाँ उसका दोष हो या जिस किसी का भी दोष हो, लेकिन लड़कियां का कहीं दोष नहीं है, क्योंकि अब अपने नहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो भी, अरे हम पेरेंट्स उसको पहले हम पिता बन के सोचते कि हमारी बेटी शॉर्ट ड्रेस पहन के हमारे मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के निकलती है, वहाँ सही है, वो भी गलत। तो यहाँ सिर्फ इसको पेरेंट्स को दोषी मानते हैं, लड़की हो या लड़का हो, हम सिर्फ After a whole night of work, we had a late start in the morning. We went to meet the NGO workers of Bihar Connect who provided innovative inputs for our research. They also introduced us to various businessmen who helped us in our survey and highlighted various important issues that need immediate attention in Bihar. After a chit-chat session with the influential people, we moved on to interview the employees of a private firm who enthusiastically participated in our survey. We then moved on to the commercial complex at Exhibition Road and interviewed a few shopkeepers and traders. Then surveyed a few hawkers at Boring Road and Kargil Chowk. Thus ended our day 2 of research. कि कभी-कभी आदमी मतलब हमें भी पुलिस की मदद करनी चाहिए, तो ऐसा आपको लगता है कि बिहार जो कम्युनिटी है वो पुलिस की मदद करती है? हाँ। प्रशासन जो है हाँ।
पुलिस ड्यूटी आवर में शराब पीता, पी के ड्यूटी करता और शरीफ के इंसान को पकड़ लेता, पकड़ के ले आकर बंद कर देता, गुंडा लोग को छोड़ देता। यहाँ दिन दहाड़े जुआ होता है, दिन दहाड़े नजायज होता है, दिन दहाड़े 2 नंबर का किताब बिकता है, सब गांधी मैदान थाना का मुंशी। Day 3 started with a visit to Nalanda, while on day 4, a visit to Rajgir was made on our way to Danapur. This visit helped Team Navya Bihar gain enough momentum to know about the law and order conditions of the rural areas. A meeting was organized with the SI and SDM, who enlightened us with various official statistics. Team Navya Bihar met several farmers and police constables who spoke of their concerns, but on the whole, everyone was very happy with the general law and order conditions under the Nitish Kumar regime. Finally, enough credits should be handed out to Mrs. Sandhya Sinha, an NGO worker who yielded several beneficial information for this survey. Ma'am, we have been seeing on our survey that many people are complaining of unemployment, and they are also talking about these schemes and of Nitish Kumar ji, that he's building convention centers, museum, and all the workers that are being employed there are brought from outside Bihar. So can this be implemented as a good scheme that you employ your own people, or are they inefficient enough that makes Nitish Kumar ji to bring people from outside? Exactly. I believe this. Because you see, you ask, like I told you about that policeman, Suttal Hoga. Now these people, because their hometown is nearby, access easy है. So they'll work for 2 days. 3rd day they'll vanish off to their hometown. तबीयत खराब हो गया, नहीं आएंगे. उसमें क्या करेगा? एक टाइम बाउंड फ्रेम होता है किसी प्रोजेक्ट का, एक फाइनेंस सेट का होता है, इंटरेस्ट चढ़ता है उस पर. Which these people they don't understand, they don't care. आज घर में छठी हो गया है तो आज किसी का जनेऊ हो रहा है तो आज किसी का शादी हो रहा है. For smallest reason, because the home is nearby. Sir, कोई ऐसे नए law and order schemes which were introduced by Nitish Kumar ji that have brought in positive effects on the health sector? I think नीतीश कुमार जी ने दवाइयाँ अच्छी दवाई है, दवाई अच्छा जो है सो सप्लाई किया है. लोगों को रहने के लिए आज मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ये एक कनेक्शंस बनी हुई है. यदि आप एब्सेंट हो तो तुरंत एक्शन होते हैं. इसलिए लोग अब रहने लगे हैं, देहात में रहने लगे हैं, दवाइयाँ फ्री होती है, लोगों को इवन पैसे दिए जाते हैं अस्पताल से. इसके चलते वॉटेवर द परसेंटेज ऑफ पेशेंट whenever we approached women, so they were always reluctant to answer, or some of them called their husbands to answer on their behalf. So do you think that women in Bihar are educated and confident enough to tackle their own problems, and if not, what can be done about it? But in Bihar you find that women will have really to be inspired and to make them confident to come out and speak. But things are changing. Things are changing. What it was 5 years or 10 years back, now things have changed. There is no doubt. It will take time to completely brush aside this social taboo and this, like guided by the husband or the family. अच्छा ये नहीं करेंगे, ये डर डर के करना, ये करेंगे तो परिवार बदनाम होगा, अच्छा वो करेंगे तो ऐसा होगा. तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में, तो it will take some time. But things are changing.